Hello everyone, welcome back. So in the last lecture we completed the chapter polynomials. Okay, students, now we completed the two chapters of algebra. The chapter number 2 of your NCERT polynomials and the chapter number 3 pair of linear equations in two variables. Now students, this is again a chapter from algebra. Okay, and the chapter is going to be very interesting. Okay, students, in this chapter we will be using the concepts of middle term splitting we just studied in the quadratic polynomial. Okay, also students, in this chapter we will be using the concepts of word problems we studied there in chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Okay, so students, I would suggest you, if you didn't complete that two chapters, first of all complete that two chapters, then only study this. Okay, so let's start this quadratic equations. Okay, students, a quadratic polynomial, okay, whenever it is equated to 0, the resulting equation, okay, the equation you obtained will be a quadratic equation. Okay, so yes, the definition I can write in this way. Whenever a quadratic polynomial is equated to 0, the resulting equation is known as quadratic equation. Now just tell me students, what was the standard form of a quadratic polynomial? The standard form of a quadratic polynomial was ax square plus bx plus c. So students, what should be the standard form of a quadratic equation? Whenever a quadratic polynomial is equated to 0, that means ax square plus bx plus c is equal to 0 is going to be the standard form of a quadratic equation. So the next topic is standard form of a quadratic equation. You can see ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are any real numbers. Obviously a is not equal to 0. Why? Because if a becomes 0, that means coefficient of x square becomes 0, that means the whole term x square becomes 0, and in that case the equation will not be quadratic anymore, it will reduce to linear form. Okay, so yes student, we can say the a cannot be 0, but a, b, c can have any real numbers. So a is a non-zero real number, we can write in this way. Okay, and b and c can have any real value. X is the variable of equation. Okay, variable means the value, the unknown value. Okay, the value of x we will find very soon. Okay, when we will solve a quadratic equation. Okay, chaliye students, let's take some examples of quadratic equations. Okay, now let me take some examples. Okay, students, एक example लिया जैसे मैंने 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. अभी तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, जैसे ही मैंने इक्वल करके 0 लगाया ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए और एग्जांपल्स लें, अपन और एग्जांपल्स लेते हैं. अगर और एग्जांपल लें तो लेट मी टेक मोर एग्जांपल्स. सी स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूं x स्क्वायर minus 9 is equal to 0. What do you think? Whether it's a quadratic equation? Yes, it's a quadratic equation. But here the b is 0. The coefficient of x is 0. Therefore, x term is not there. Okay. Yes, it is again a quadratic equation. Now, students, if I take more example, just let me know whether the equation I am writing is a quadratic equation or not. Okay. Suppose I am writing x square plus 2 root 2x plus 1 is equal to 0. Yes, it's a quadratic equation. Okay, you can compare with the standard form. The value of a is plus 1, the coefficient of x square is plus 1, the value of b is plus 2 root 2, the coefficient of x is plus 2 root 2, okay, and the value of c is plus 1. Okay, now students, just let me know, what do you think for this particular? See, suppose I am writing x plus 1 upon x is equal to 2. What do you think, students? Is this quadratic or not? Now, at first sight, when you just see this, you can say, no sir, it's not a quadratic equation because x square is not there. Okay, but students, if you simplify this,
you will be getting a quadratic equation. That means it's a equation that is reducible to quadratic. You can check. Okay, if I just take LCM, what will be the LCM, students? X will be LCM. Okay, you can consider 1 in the denominator of x. Okay, so x into x will make it x square plus 1 and it's equal to 2. If you cross multiply, students, you will have x square plus 1 as 2x, and you will have x square minus 2x plus 1 is equal to 0. Now students, you can check. Yes, it's a quadratic equation. Okay, so students, if you have to just check whether the equation is quadratic or not, you just need to simplify that, and after simplifying, if you get the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 form, so yes, you can say it's a quadratic or it's not. Your NCERT exercise 4.1 is based on the same. Okay, you just need to check whether the equation is quadratic or not. Okay, it's very simple. Okay, let me take one more last example. Okay, based on this, whether the equation is quadratic or not. Okay, just student tell me for this particular equation. Okay, let me take just take another equation. Okay, see, suppose the equation is this: x minus 2 whole cube. X minus 2 whole cube is equal to, suppose, 2x into x square plus 1. Just tell me, students, whether the equation is quadratic or not. You just can't say anything without simplifying this. Okay, now students, if I simplify this, what I am gonna have? I am gonna have a minus b whole cube. Okay, see, a minus b whole cube, if you simplify, you will have a cube. A minus b whole cube identity, I hope you all remember. Okay, a cube minus b cube. Okay, so 2 cube is 8. Okay, I am using this identity, students. I am writing the identity here. I am using this identity, a minus b whole cube. A minus b whole cube, it's nothing but a cube minus b cube minus 3 a square b plus 3ab square. Okay, students, I will be using that identity. Okay, now students, just check here: a cube minus b cube minus 3a square b, so x square and b is plus 2, so into 2. Okay, and then plus 3ab square, then plus 3ab square, so plus 3a and b square. Okay, and in the right hand side, if you multiply 2x inside the bracket, you will have 2x cube plus 2x. Now students, just check here, if you simplify this, you will have x cube minus 8, 3 2s are minus 6x square plus 4 3s are 12x, because 2 square is 4, 4 3s are 12. Okay, is equal to 2x cube plus 2x. Okay, keeping all the term one side. Okay, अगर मैं सारी टर्म्स को मान लो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं, तो ये प्लस का जो x क्यूब है, ये इधर राइट हैंड साइड में जाके 2x क्यूब में से माइनस होके क्या बचेगा? प्लस का x क्यूब बचेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो माइनस का 6x स्क्वायर है, जब ये राइट हैंड साइड में गया तो ये बन गया प्लस का 6x स्क्वायर. ठीक है, प्लस का 12x जब आपने राइट हैंड साइड में भेजा तो वो 2 भेजा, तो 2x माइनस 12x ये बन गया माइनस का 10x. बोलो क्लियर स्टूडेंट्स? एंड माइनस का 8 जब आपने इधर ट्रांसपोज करा तो ये बन गया प्लस का 8. एंड लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्वियसली कुछ नहीं बचा, तो ये चीज किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी. आई होप इट स्टूडेंट्स दिस point is very clear to you all. Okay, so yes, what do you think, whether it's a quadratic equation or not? No, it's not a quadratic equation, it's actually a cubic equation, because the degree of this particular polynomial is 3. अगर मैं 0 पे इसको इक्वेशन ना कंसीडर करूं तो इसकी में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो यस, वी कैन से इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट स्टूडेंट्स, just think if this 2 were not here. अगर मान लो ये जो 2 है, x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर है, इसमें ये 2 नहीं होता मान लो. ओके, अगर ये 2 नहीं होता तो क्या होता? अगर ये 2 नहीं होता तो क्या होता? ये बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए अगर ये 2 नहीं होता तो ये 2 यहाँ पर भी नहीं होता, 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 ये 2 यहाँ पर भी नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये 2 कहीं पर भी नहीं होता तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए, इस पर्टिकुलर केस में फिर क्या होता। इस पर्टिकुलर केस में होता ये कि जब ये प्लस का एक्स क्यूब इधर आता तो ये जो माइनस का एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल होके ये एक्चुअली 0 बना देता है इसको। देखो स्टूडेंट्स, ये प्लस का एक्स क्यूब जब इधर आता तो माइनस का हो जाता, तो एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट जाता एक्चुअली, तो यहाँ 0 बचता, तो एक्स क्यूब की टर्म ही 0 बच जाती। अच्छा, बाकी चीज़ें सेम रहती है, आप देख सकते हैं ये माइनस के 6x² को अगर मैंने इधर लेके आया तो ये प्लस का 6x² हो गया। ठीक है, 12x को इधर लेके आया तो ये अब x में से माइनस होगा तो ये बचेगा माइनस का 11x। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर। और जो माइनस का 8 था, जब उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा तो ये बन गया प्लस का 8 और ये इक्वल टू 0 ही है। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है, ये बस मैंने ट्रांसपोज करा है सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में, तो देखो माइनस का 6x² इधर आके प्लस का बन गया। ठीक है, प्लस 12x, x में से माइनस हो गया, माइनस का 11x हो गया, और माइनस 8 इधर आके प्लस का 8 हो गया। सो द इक्वेशन वी ऑब्टेन ओके इज 6x² minus 11x plus 8 is equal to 0. Now what do you think, whether it's a quadratic equation or not? Yes, it's a quadratic equation because the x cube term has been cancelled out. Okay, so students, what we can conclude? We can conclude that after simplifying only we can tell actually the equation is quadratic or not. Clear students? I hope no problem up to here. Now let me just erase this all and we will be starting the next topic. The next topic is roots or solutions of a quadratic equation. Students, solution means the values of variable which satisfies the equation. मतलब x की वो वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। मतलब अगर मैं उस वैल्यूज को, उस x की वैल्यू को x की जगह इक्वेशन में पुट करूं, ओके, तो मुझे इक्वेशन सेटिस्फाई मिलनी चाहिए। मतलब अगर सारी टर्म्स एक ही तरफ है तो राइट हैंड साइड में मुझे 0 मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही होती हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ थोड़ा आप पॉलिनोमल्स में बात करते हैं। पॉलिनोमल्स में आप ये बताइए स्टूडेंट्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमल क्या होता था? जीरो ऑफ पॉलिनोमल भी तो यही होता था, x की वो वैल्यू जिसको कि पॉलिनोमल में x की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करने पर जो पूरा पॉलिनोमल था वो 0 हो जाता था, मतलब px 0 हो जाता था। और अगर पॉलिनोमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो देखा जाए तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमल थे वही तो इक्वेशन ऑफ वही तो सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस, कोई नई बात नहीं है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस होते थे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। ठीक है, क्योंकि वहां भी x की वो वैल्यू लेते थे जो कि पॉलिनोमियल को 0 बना देती, यहां पर x की वो वैल्यू ले रहे हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब ही है कि अगर सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है और अगर मैं x की जगह वो रियल नंबर पुट करूं तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस, एज इन द केस ऑफ polynomials, as in the case of a quadratic polynomial, we just discussed in the quadratic polynomial in the first lecture only, at most we can have two real zeros of a quadratic polynomial. So yes, I will write here, at most I can have two real solutions of a quadratic equation. मतलब एक quadratic equation को solve करने पर ज्यादा से ज्यादा आपको 2 ही आंसर मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कम से कम एक भी नहीं मिल सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही बताया आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर से ही चला जाए, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, उस केस में नो रियल जीरो विल बी देयर। ओके स्टूडेंट्स, तो हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो इट कैन हैव 0 real solution, it can have 1 real solution, or it can have 2 solutions. So we can generalize that a quadratic equation can have at most 2 real solutions or 2 real roots. Bolo students, is that clear? Okay, everything is clear? Okay, so let me just take the examples. Okay, through examples you will be getting the better idea. Okay, let me take this example. See, suppose 2x square
minus 5x plus 3 is equal to 0. Students, what do you think? How many solutions can be there? Okay, students, here you will find two solutions will be there. Now, what are the ways to solve the quadratic equation? We will be learning very soon. Okay, but if you check, students, for this particular, okay, if you check for this particular, for x is equal to 2, if you have to check just whether x is equal to 2 is the solution of this or not. Okay, now for x is equal to 2, students, so you just need to check by replacing x with 2. Okay, so 2 into 2 is square minus 5 into 2 plus 3. Now students, just simplify. 2 square is 4, 4 2s are 8. Okay, minus 5 into 10, if you minus 5 into 2, you will find minus 10 and plus 3. 8 minus 10 is minus 2 plus 3. 3 minus 2 is equal to 1. Okay, so students, since it is equal to 1, okay, the equation is not satisfying because we want in the right hand side what? 0. Since 1 is not equal to 0, since this x is equal to 2 is not satisfying the equation. Okay, so we will say that yes, 2 is not the solution of this equation. Okay, तो अगर आपको चेक करना हो कि कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आपको बस x की जगह पुट करना है और आपको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू उस उधर पुट करने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. चलिए मैं सेम एग्जांपल को ले रहा हूँ वापस से एक बार. सेम ही एग्जांपल लिया, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लिया. यही थी ना स्टूडेंट्स इक्वेशन. ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि आप चेक करो कि x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. ओके, नाउ एट x इज इक्वल टू 1, इफ आई जस्ट चेक, यू स्टूडेंट्स check 2 into 1 is square minus 5 into 1 plus 3. 2 into 1 square is plus 2, minus 5 into 1 is minus 5 plus 3. 2 minus 5 is minus 3 plus 3. I got 0. The equation gets satisfied. So yes, I will be saying that x is equal to 1 is the solution of this equation. Okay. Similarly, students, if you check at x is equal to, suppose you check at x is equal to suppose minus 3. Okay, and you have to check whether it's a solution or not. Okay, so you just need to put minus 3 at the place of x. I guess no confusion at all. Okay, students, so whether it's a 0 or not, you can tell now. Okay, students, let me take the second second solution of this. Okay, what do you think? What should be the second solution? Okay, one we already calculated, x is equal to minus 3. If you check, it won't satisfy the equation. Okay, it's your part, you will check. Okay, but students, if I just ask you what should be the next solution of this. Okay, so students, let me just tell you the solution of this. Okay, is going to be plus 3 by 2. Okay, you may check, student, you may check for x is equal to 3 by 2. Okay, let me show you. Now how I calculated x is equal to 3 by 2, I will be just telling you. Okay, but you just observe here that whether x is equal to minus 3 by 2 is satisfying the equation or not. Okay, you can check, students. 3 square is 9, 2 square is 4. It's minus 5 3s are 15 by 2 and plus 3. Now students, let's just simplify this one. Okay, this 2 when cancelled with this 2, it will become plus 9 by 2. Okay, so it's plus 9 by 2 and it's minus 15 by 2 plus 3. Now students, if you take LCM, what will be the LCM, students? The LCM will be 2 only. Okay, so in the numerator you will have 9 minus 15 plus 6. Okay, 9 minus 15, what do you think? 9 minus 15 is what? 9 minus 15 is minus 6. Clear, students? 9 और 6 15 होते हैं, तो 9 minus 15 कितना हो जाएगा? 9 minus 15 minus 6, so it's minus 6 plus 6 upon 2. Students,
it's 0. Okay, so yes, x is equal to 3 by 2, okay, and x is equal to 1 are the solutions of this quadratic equation, okay, or zeros of this quadratic polynomial if I don't consider equal sign, equal to 0 sign. Okay, so yes, we can understand that. Okay, now students, let's move further. Okay, the next topic is going to be what are the ways to solve a quadratic equation. So the next topic we will start is methods for finding the solutions for a quadratic equation. Okay, see, the methods for solving quadratic equations are these three. See, methods for solving quadratic equations. The first method we have to discuss is factorization. Okay, this factorization is nothing but the same we did in the case of quadratic polynomial, middle term splitting. We just need to factorize the given quadratic equation by middle term splitting. Then by equating the factors to 0, we will be calculating the solutions of the quadratic equation. The next method is completing the square method, and the final one is quadratic formula. Okay students, so we have to deal with these three methods. So in today's class we will be starting with the first one, that is factorization method. Okay, so let's start with factorization. Solving a quadratic equation by this factorization method. Okay, now students, because it's simple, just middle term splitting, so we have to just solve the questions based on that. Okay, let me start with the very first question in which we will solve the quadratic equation. Okay, see, suppose let's take a very basic one, x square minus 1 is equal to 0. Okay, and we have to find the solution of this equation. So students, it's going to be very simple, I guess. See, it's x square, this minus this 1 can be written as 1 square. Okay, now if you apply the identity a square minus b square, it will become a minus b, a plus b is equal to 0. Clear students? Now either x minus 1 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. So the values of x are 1 or minus 1. Okay students, you can check the both values will satisfy the equation. Either you will put in the given equation x is equal to 1 or x is equal to minus 1. It will make the equation satisfied. Okay, so yes, the solutions or roots of these quadratic equations are x is equal to 1 and minus 1, or x is equal to plus minus 1. Clear students? Let me take more example. Say students, suppose you have to find the solutions of this particular. Now students, I hope you can relate this by the identity x minus 1 whole square. Okay, so this is nothing but the identity x minus 1 whole square. Okay, or if you factorize, you will get the same thing, x minus 1 into x minus 1. Okay, so it's gonna get x minus 1 into x minus 1 is equal to 0. Now students, here you will check by equating the two factors to 0, you will be getting x is equal to 1 comma 1. So yes, x is equal to 1 is the solution of this equation. Okay, so in that particular case we are getting one solution. Or in the case of quadratic polynomial, we named it as repeating 0. Okay, the graph cuts the x-axis at the point x is equal to 1. Okay, on x-axis. Clear? So yes, we can say x is equal to 1 is the only solution of this particular quadratic equation. Clear? Now let's move, let's take more questions. Okay, see students, suppose, see here carefully students, suppose x square plus 1 is equal to 0. Now what would you say? X square plus 1 is equal to 0. Students, now here no any identity is getting applied. So students, here if plus 1 is transposed in the right hand side, you will have x square is equal to minus 1. In this particular case students, you have to think, can a number be possible whose square is minus 1? No. The square of something cannot be ever negative. Okay, so there can be no value of x, there can be no real value of x for which whose square is minus 1.
Okay, so yes, yes students, in this particular equation we will say that x has no real solution. So x has no real value. X has no real value. Okay, there is no number whose square is -1. So yes, we will say that no solution of this equation exists. No real solution exists. Okay, no real solution exists. Clear students? I hope no confusion. Okay, let me take more questions. See students, question number 4. Let's take one more question. Okay, see students, suppose we have to find the solutions. Okay, you have to find the solutions given in the equation given in the standard form. Okay, suppose the given equation is this. See, x square, okay, minus x minus 12 is equal to 0. Now students, now here we will actually factorize this. Okay, this you can compare with the standard form. Here a value is 1, b is -1, c is -12. Students, now you have to apply middle term splitting here. Just think the splitting, you just need to split this minus x. Okay, so just think splitting of minus x to get the minus 12x square. Let me just tell you what we do in the middle term splitting. Basically, we just split this middle term in two terms so that the product is equal to the product of these two terms. So if you take the product of first term and the last term, okay, so minus 12 into x square, the product is minus 12x square. So in this case, we have to split this minus x, in the two terms, so that you will get the product minus 12x square. Okay, so x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? अगर आप x के कोफिशिएंट को कंसीडर करो तो वो है -1. तो आप तो ऐसे सोचो कि -1 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि माइनस का 12 आता हो. ओके, ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हियर. ओके, अगर आप 12 के प्राइम फैक्टर्स करें, ओके, तो आपको 12 के प्राइम फैक्टर्स के अंदर से ही इसके जो स्प्लिटिंग है वो मिल जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ अभी मैं आपको बता देता हूँ. इसकी स्प्लिटिंग होने वाली है प्लस 3x एंड माइनस 4x. आप चेक कर सकते हैं 3x में से अगर आप माइनस 4x, 3x में से अगर आप 4x माइनस करोगे या 3x में माइनस 4x प्लस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस x, और आप अगर 3x में माइनस 4x मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 12x स्क्वायर. So students, yes, we can say this can be the splitting of this. So now we know the splitting, so we just need to factorize this, okay, and we have to get the answer. Okay, so students, let's just get the answer. Okay, see, yes, x square plus 3x minus 4x, x square plus 3x minus 4x minus 12 is equal to 0. Now if I take common in these two, x will be common and it's x plus 3. Here minus 4 will be common, it's again x plus 3 is equal to 0. Now x plus 3 will be the common factor out of this, and x plus 3, x minus 4 is equal to 0. Now either x plus 3 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. So the values of x is either minus 3 or it's plus 4. I hope students you know how we are actually factorizing the given quadratic equation, and we are actually getting the solutions. Okay, let's take more questions. Okay, root 2x square plus 7x, okay, and suppose it's 5 root 2 is equal to 0. Suppose you have to factorize this. Okay, how you will factorize this, students? Okay, see, you want splitting of 7x. You want splitting of this middle term 7x. So you want to get the product of first and last term. That is, you want the product of what? Root 2 and 5 root 2. So students, just check here. If you take the product of root 2
with this 5 root 2. Okay, so students, what will be the product here? Root 2 into root 2 will become 2 and 2 into 5 will become 10. So the product of these two is 10. Okay, and you have to split this 7. Okay, if I just see the coefficients. Okay, so 7 को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है कि प्लस का 10 आता हो. तो स्टूडेंट्स आप अगर थोड़ा सा इसको सोचें तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 and 2. 5 + 2 7 होता है और 5 × 2 जो है वो 10 होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए कर देते हैं इसकी स्प्लिटिंग. इट्स √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 = 0. स्टूडेंट्स यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं. तो हाँ, √2x यहाँ पर कॉमन है. ओके, तो एक x बचेगा और एक यहाँ पर √2 है. क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो प्लस 5x और प्लस 5 √2 इनमें से प्लस 5 कॉमन लिया जा सकता है. तो इनसाइड द ब्रैकेट we will have x plus √2 only. Okay, so from here if I take x plus √2 as whole common, I will have this one. Okay students, so from here I can see the values of x is either minus √2, or if I put this √2x plus is equal √2x plus 5 is equal to 0. Okay, so the value of x I'll be having is nothing but minus 5 by √2. What I did basically, I just equated these two factors to 0. Okay, and by equating x plus √2 is equal to 0, I have got x is equal to minus √2. Let me just write one more step in between. X plus √2 is equal to 0, or √2x plus 5 is equal to 0. Okay students, clear? So let's take another one, question number 6. Okay students, see this one also. Okay, suppose you have to split this time x square. You will find the questions in the NCERT students. Okay, you will find the same questions in the NCERT. X square minus 3x minus 10 is equal to 0. Okay, so students, you have to just split the minus 3 to get the product minus 10. Okay, so you can check the splitting is going to be plus 2x and minus 5x. 2x and minus 5x will become minus 3, and 2 into minus 5 will become minus 10. Okay, now after that I guess no issue. It's x plus 2 minus 5 is common. X plus 2 is equal to 0, or I can write x plus 2 x minus 5 is 0, or either x plus 2 is equal to 0. Let me just write here, either x plus 2 is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. So by putting x plus 2, because the product of these two 0, so either it's 0 or it is 0. Okay, so the values of x is minus 2 or x is equal to 5. So x is equal to 2, x is equal to minus 2 and x is equal to 5 are the required solutions of this particular quadratic equation. Okay students, I hope you are getting my point. Okay, let's take one more students, question number 7. See, in this particular question I am taking in this way. See, 3x square plus 5 √5x minus 10 is equal to 0. Now students, you have to split this plus 5 √5. The middle term is plus 5 √5x now. So you have to split this plus 5 √5. In this way, you get the product 3x square into minus 10. That is, you get minus 30 in the product. Okay. So students, 5 √5 को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है कि उनके मल्टीप्लिकेशन से आपको माइनस का 30 मिलता हो. स्टूडेंट्स, एक चीज तो आप पहले इसको ऐसे सोचो कि क्योंकि हमको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, क्योंकि हमको प्रोडक्ट में माइनस का 30 चाहिए, तो वो जब भी पॉसिबल है जबकि एक प्लस का फैक्टर हो, एक माइनस का फैक्टर हो. ठीक है, और मतलब दोनों ही, एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की हो, और दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 30 आना भी जरूरी है. ठीक है,
तो स्टूडेंट्स 5√5 को एक बच्चे के दिमाग में आता है कि सर 2√5 प्लस 3√5 लिख लें। भाई 2√5 प्लस 3√5 आप लिखते हो तो प्लस का 5√5 बनता है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। 2√5 को अगर आप 3√5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है प्लस का 30, क्योंकि प्लस प्लस के नंबर जो हैं वो तो प्रोडक्ट में प्लस ही देंगे, बट हमको तो माइनस का 30 चाहिए, तो वो मेथड वहीं खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको प्लस 5√5 को ऐसे ब्रेक करना है कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। तो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो ये आप इजीली सोच सकते हैं कि प्लस का 6√5 और माइनस का √5, तो 6√5 में से अगर आप एक √5 माइनस करेंगे, मतलब -1√5 आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, तो 6√5 माइनस √5 प्लस का 5√5 बनेगा। और आप इनको मल्टीप्लाई करके अगर देखें 6√5 को -√5 से, तो आपको देखो √5 इंटू √5 -5 बनेगा, तो 6 इंटू -5 जो है वो माइनस का 30 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपको सोचना है। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्टर्स हम लिख देते हैं। जो फैक्टर हैं वो होंगे 6√5x माइनस x, क्लियर। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी होने वाले हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चंस इस पे लेऊंगा। ठीक है, मैं आपको अगर इस चैप्टर के अंदर ये बताऊं कि अपन किस वे में चलेंगे, तो स्टूडेंट्स जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी अपन ने, इसके बाद सी we have to take plus √5x, we have to take plus 6√5x and minus √5x, okay, minus 10 is equal to 0. Let me just complete this. It is 3x, so inside the bracket I will have x plus 2√5, and here you can observe, see students, if you break 10, 10 can be 10 can be factorized as 2 into √5 into √5. So 2√5 can be 2√5 into 5 can be written, okay, in the place of 10. So from that I can easily take minus √5 common, okay. So I will have inside the bracket x plus 2√5 only. Why students? Because I have taken the negative number common, negative number outside, so the sign of inside the bracket will get changed. So yes, it will become x plus 2√5, okay, and 3x minus √5 is equal to 0. So from here either x plus 2√5 is equal to 0 or 3x minus √5 is equal to 0. So either the value of x is minus 2√5 or the value of x is plus √5 upon 3. Clear students? I hope up to here no confusion is there, okay. हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैं कुछ इक्वेशंस ऐसी भी लूंगा जो कि रिड्यूसिबल्स टू क्वाड्रेटिक होंगी। फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम केवल और केवल वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स ही एग्जाम में यूजुअली आती है, जहां पर हमको इक्वेशंस पहले फॉर्म करनी होगी और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।